વાત કરીએ હવે અમદાવાદની તો અમદાવાદમાં સંવિધાન હત્યા દિવસની ઉજવણી કરાઈ, જેમાં 25 જૂન 2025ના દિવસે લાગુ કરાઈ હતી। 25 જૂનના રોજ ભૂતકાળમાં જે રીતે કટોકટી લાગુ કરાઈ હતી, ત્યારે કટોકટીની યાદમાં ભાજપે સંવિધાન હત્યા દિવસની ઉજવણી કરી। કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મનસુખ માંડવિયાએ કોંગ્રેસ પર વાકપ્રહાર કર્યા। इंदिरा गांधी सरकारे कटोकटी जाहिर करी हती। तानाशाही व्यक्तिनी धारणाथी कटोकटी लदाई हती। आज दिवसे लोकशाही खत्म करवानो प्रयास थयो हतो तेवुं मांडवियाए जणाव्युं। आज थी 50 वर्ष पहला देशनी अंदर कटोकटी लादीने देशना संविधाननी हत्या कांग्रेस द्वारा करवामां आवी हती। देशना भविष्य माटे देशना नागरिक जागृत रहे, देश भविष्य में आवी कोई कटोकटीनो सामनो न करे एना माटे थईने देशना नागरिकों में अवेरनेस आवे, देश सतर्क रहे। आ घटना ने यानी कि संविधान हत्या दिवसना माध्यम थी कार्यक्रम द्वारा जनता ने हमेशा सचेत करता रहीए। आज अमदावादनी अंदर पण मोटी संख्यानी अंदर जनताए उपस्थित रही अने संविधान हत्या दिवस निमित्ते प्रेरणा मेळवी अने भविष्यनी अंदर लोकशाही ने मजबूत करवानी कटिबद्धता व्यक्त